A very good evening to all our students and profession who have joined with us in this webinar presented on protection of children right against under criminal justice system by our honorable speaker Mr. Ikrant Sharma sir. His career as an advocate by profession in year 2000 he got enrolled with Delhi Bar Council after completing law degree from Allahabad University. Since then he was dealing in civil and criminal matter. After engaging into the advocacy profession, he managed to work with many government department agency following or many key work area where he gained the experience. In the year 2003, he was appointed as the Council of Municipal Corporation of Delhi to represent the department in overall Delhi court and tribunal. He worked so hard to get knowledge and enhance by working capability to work so hard to get knowledge and enhance capability to represent in their department. In year 2006, he was appointed Central Zone Central Zone Leader of North Delhi Municipal Corporation to represent the department. After that, he was appointed at the Council of North Delhi Municipal Corporation, South Delhi Municipal Corporation, Jal Nigam Board, SCST Finance Corporation of Delhi, Delhi Finance Corporation to represent the department, the Delhi High Court and other Delhi High Court tribunals. Since then, he was working in this government department and served by the best of to them. In the year 2018, he became the chairman of a legal department of Disabled Sporting Society. Then in the year 2019, he was appointed as a panel counsel of India to present the Department of Supreme Court of India. Recently in 2019, he was appointed as a vice president of All Cricket Association for physically challenged. He was going for World Cup in August 2010, 2019. Thank you, sir. Now you can continue, sir. Yes, thank you very much. And basically, it's a very good idea to be connected with each other. And by way of this communication, the education or the concepts and the knowledge should be known to everybody. I just wanted to say that any queries, anything which you want from me, you can ask it from me. Basically, today's concept is pertaining to the rights of the children, the child welfare. Basically, the main important aspect of this today's topic is the welfare of the child, the rights of the child, the duties of the child, and the protection given under the law to the childrens. And it is a basic problem which India is facing, because if we look into this matter, the childrens of any country are the backbones and the backbones of the for the development of the country and for the future of the country. So the necessities, requirements of the children are very important, and because even the government also knows about it, and people also know about it, you must be aware about it, and you must be concerned about it. But what rights they are getting, what duties they are getting, what responsibilities our department, our law, or what the constitution gives to them, that is very important. Now, every coin has two faces. You must be aware about it. जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं. तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर द दिस concept by way of my experiences. First thing. Second thing is we will discuss on the legal issues also. Basically, because law is very codified, whatever things have been mentioned, it has been written, and on the basis of the written law, those things have been implemented. Now, this is very important, that something which has been written is a law, but the written law is to be executed. In India, if we see, in India, basically law are being made, or they have been created, but as far as implementations are concerned, the execution work is not being done properly. Now, if we look through about the children's and the juvenile system and the system in India pertaining to the child, that is very important. Now,
The topic is the topic is pertaining to the child, the role related to the children in India. Now we'll go through this in a systematic manner. Basically, what law says, if we go through the contents of the IPC, you must be aware about the IPC, where the law has been stated, the sections are been there, so that any offences which are been made are been specified in IPC, and in those IPCs we can elaborate all those things, and we can specify all the things which are been misused, or where the rights are been infringed, or where the duties and responsibilities are being infringed. So we will go through first, we'll go through about the section 81, where it clearly gives an indication that pertaining to the 81, which clearly gives an indication that the right, it is pertaining to the rights of the children. And the children's are being the age system, the parameter of the age are been defined, and it's been defined in three stages. Three stages. One is in 81. If we go through the contents of the 81 of this thing, that this is pertaining to 81, 82. Sorry, the 82 says act of a child under 7 years of age. Now, the 7 years of age, basically the law was being made, it was being drafted way back, and the law is based on the customs and usages as prevailing upon that time. So when these things were being made, when these things were being implemented, at that time the situation was different from what the present scenario is going on. And now that section 82 clearly says that nothing is an offense. Now, this is very important. Nothing is an offense which is being done by child under 7 years of age. So that clearly gives an indication that anything which is being done by any by a minor defines with basically 7 years, below 7 years, he is not at all been, nothing has been there, and there is no crime, there is no illegality. Now we proceed further now, because this is a streamlined. Section 82 says about, talks about only pertaining to 7 years. Now we will go about 86, 83. Now, 83 says act of a child above 7 and under 12 years of immature understanding. Now, this is very important that it talks about the 7 years and 12 years. So, it is between 7 and 12, because below 7, there is nothing at all. But if there is an act which is illegal and is being conducted after more than 7 years, and it's between 12 years, now in that cases, that this immaturity understanding is very important in that segment. Now, immaturity segment can be justified or can be identified by the investigating agency, where the maturity level of the child is very important. If nowadays, because when I already stated to you that these things, the law was being prepared, law was being made at very long time back. Now things have been started changing, and if where we talk about the maturity level and the immaturity level of the child, I think the maturity level of the child of a 12 years is, they are very much mature about it. But these things are to be talked, and these things are to be rectified, and these things should be considered in law. Because if we see that the most of the crimes, the tendency of the crime, the tendency of the criminal mind has changed. Even now, the most of the crimes are being done by the kids, by the minors, by the minors. Now, if we see about you must be aware about the Nirbhaya case. Now there were six accused, and out of those six accused, one was the minor, and he got the benefit only with the age. And if we look into the incident, about that incident, that minor child, which was under the parameter of minor, has committed a, you can say, a very bad crime. It's a heinous crime which he committed, but he got the benefit only pertaining to the age segment, which law has provided. Now this is very important. When now this talks about, now where we are talking about the section 83.
It talks about 7 to 12, but the immaturity level and the immaturity level. Now, this thing has to be seen that it's in spite of or irrespective of the age, the maturity level, of the child. Okay, Komal Shukla is saying that I should be louder. I think it's not been. My voice is not louder now. I'll try to be more and more louder. Now, if we talk about the maturity of the child or maturity of the minor, because child is not we are talking about the minors. So the maturity level of the minor is very important in the present scenario, in the present judicial system. And the modus operandi, we say, the modus operandi of any crime, there is a intention, there is a motive. So the minor, when they comes, they do any crime, their modus operandi, their integrity, their mindset setup, their mental level is very important. So that as far as it has been stated in section 83, where it clearly speaks these words about the immature understanding or immaturity level of the minor. Now these things have been stated, anything which are been done under these things are not covered under a crime or not will be treated as a crime. Now if we talk about, you must be aware about it, आपने देखा होगा और शायद इस चीज को महसूस भी किया होगा कि हम माइनर्स की बात करते हैं, माइनर्स के रिफॉर्म्स की बात करते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं, लेकिन आपने बहुत सी चीजें ऐसी देखी होंगी जो आपकी नजरों में रोज आती हैं, आपके आप उसके में चिंता भी जो है जताते हैं, यू आपको एप्रीहेंशन भी होता है, लेकिन आप लोग उस चीजों में करते नहीं है क्योंकि आप लोगों के पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिखता आपको कि हम लोग किस दिशा में जाएं। जैसे आपने नोट किया होगा कि बच्चे, आप जब व्हीकल पे जाते हैं, आप कार पे जाते हैं, किसी टू व्हीलर पे जाते हैं या किसी भी रोड साइड्स में आपको बेगर्स मिलते हैं रेड लाइट्स में। उन बेगर्स की अगर आप तादाद देखें तो मोस्ट ऑफ द बेगर्स जो बेगिंग, इट्स ए प्रोफेशन नाउ, व्हाट आई से इज, बिकॉज उस प्रोफेशन में बेगिंग में आप देखेंगे कि बच्चों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। आपने राइट्स दिए हुए, अभी आपको मैं जैसे आपको 82 और 83 सेक्शन बताया, उसके साथ ही आपका सेक्शन स्टार्ट आता है। मैं आपका आपका दिमाग उसमें फोकस करना चाहता हूँ 361 में, where 361 what says, 361 basically is a section where it clearly pertaining to the kidnapping and these things, where उस पे भी आपका abductions and और kidnapping, where जहाँ पे आपका mentioning है कि आपकी एज डिफाइन की गई है। हालांकि दिस इट हैज नथिंग टू रिलेट विद द माइनर्स एंड ऑल, बट उसमें एक एग्जेम्पशंस है जहां पे आपकी इंटेंशंस जो होती है लॉफुल abduction, lawful kidnapping, and unlawful kidnapping, where the age is very important. Now, agar you are, if the age of the girl is below 18 years, if she gives a consent also, then also उसकी consent को जो है, क्योंकि 18 साल से नीचे है, उसकी consent को legally lawful नहीं माना जाता, because वो एक तरह से parental custody में है। गार्जियन जो है उनके, वो एक गार्जियन कस्टडी में है। So where the, if the consent is also been provided, then the law says that her consent is not valid, and it has nothing, it is illegal pertaining to the eyes of law. Now राइट्स की जो बात करते हैं, बच्चों को बताने की बात कर रहे हैं और हम लोग को बच्चों के राइट्स की बात करते हैं, इसी में आपको एक सेक्शंस में लेना चाहता हूँ 317, where exposure and abandonment of child under 12 years by parent or person having care for it, means law says, and it has been codified. uh, uh, okay, yes, participants please, okay. Now, where it says that exposure and abandonment of a child under 12 years, yeah, that means the parents, either the father or the mother, they have the duty, they are duty bound to provide all the infrastructures to the children, their children, and anybody who are being the father or the mother of a child under the age of 12 years or having the care of such child shall expose or leave such child in any place with the intention of wholly abandoning such child shall be punishable. Now, I am focusing
And this is a query, sir. It is 16 years of age of a girl's invalid consent or 18 years. Now it is Komal, as far as your query is concerned about the age of 16 and 18. The age for the consent is 18 years. It is not below the 18 years, but because क्योंकि आजकल हम लोग अब now the trend has changed. Earlier there was no documentations of the birth certificates of the girl. गांव में बहुत सी लड़कियां ऐसी थी जिनका रेप हो जाता था, बाद में उनको कहा जाता था कि इनकी कंसेंट है और ये कंसेंट इनकी लीगल है। तो उस समय एज जो था, एज मैटर बहुत करता था। तो जब एज के सर्टिफिकेट्स मांगे जाते थे तो उनके पास वो एज सर्टिफिकेट्स नहीं होते थे, क्योंकि गांव में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, और अगर उनको पढ़ाया भी जाता था जनरली तो उनको लेट पढ़ाया जाता था, जिस कारण से उनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं आती थी। इसमें एग्जम्पशंस हैं जो लॉ कहता है, क्योंकि ऐसे केसेस भी आए, पॉसिबिलिटीज आई, प्रिजम्पशंस आई, तो उन सिचुएशंस में ये हुआ कि वहां पे उनकी एक बोनी एज का सिस्टम हुआ। मेडिकल टेस्ट में बोनी एज होना शुरू किया, और उसमें जहां पता चला कि 16 इयर्स अगर उनकी एज है तो 16 इयर्स 17 इयर्स को मान लिया जाता था कि यस उनकी, क्योंकि हाइड एंड सीक था, बट जो पेरेंट्स थे वो एज छुपाते थे लड़कियों की या एज गलत बताते थे, तो वहां पे एक एग्जम्पशन जो है, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है एक्यूज को मिल जाता था। अदरवाइज इफ वी टॉक अबाउट द कंसेंट ऑफ द एज, इट इज एन 18 इयर्स। इसी में आपको जो मैंने अभी आपका 317 पे जो मैंने आईपीसी का सेक्शन अभी मैंने बोला आपको, मैंने बताया, उस सेक्शन में ये है कि आपका जितने भी, ये मैंने इसलिए रेलेवेंट किया कि ये लॉ तो बन गया हमारा, लेकिन वी नीड टू एग्जीक्यूट, द गवर्नमेंट एजेंसी नीड टू एग्जीक्यूट दोस थिंग्स, पीपल शुड बी अवेयर अबाउट इट। एंड हाउ द पीपल शुड बी अवेयर अबाउट इट, जैसे मैंने आपको बेगिंग का बोला कि जो आज जो बच्चे हैं वो बेगर्स का रूप ले लेते हैं, बेगर्स का नाम ले लेते हैं, और रेड लाइट्स पे सरेआम सबके सामने दिखते हैं वो बच्चे, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें दो ऑफेंसेस आते हैं। 317 जो मैंने आपको बोला, वो इसलिए बोला कि अगर उनके पेरेंट्स ये काम कराते हैं तो वो भी इट्स एन ऑफेंस, और अगर उनके पेरेंट्स नहीं है, या उनके पेरेंट्स ने उनको बेच दिया है, या उनको क्या कहते हैं, उनको उनसे फोर्सफुली काम करा रहे हैं, तो वो भी पेनलाइज हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है हिंदुस्तान में कि इन चीजों को एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं हो पाता है, और जब एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता तो ये चीजें जो है साक्षात दिखती हैं। आज जो कंसेप्ट हमारा है यहाँ पे, वो सिर्फ इसलिए था कि जो चाइल्ड के लिए, आप ये देखिए जो रोजमर्रा की चीजें हैं, आप लोग सोशल मीडिया से भी कंसर्न हैं, आप लोग न्यूज़पेपर्स भी, प्रिंट मीडिया भी देखते हैं, आप लोग अवेयर हैं न्यूज चैनल्स के माध्यम से, जितने भी अभी क्राइम हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्राइम्स आर बीइंग कमिटेड बाय माइनर, एंड बिकॉज ये एक मेंटल सेटअप चल पड़ा है जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। जो बड़े आदमी जिनकी एज है, जो इस दे आर बेसिकली गैंगस्टर्स, they are managing these things, they know that there is a relaxation provided by the law, and they are misusing this relaxation, and they are indulging more and more kids pertaining to commit crime। अभी आप ये देखिए कि जितने बच्चे हैं ये चोरी भी हो रही हैं, इनसे डकैतियां भी हो रही हैं, इनसे और अलग अलग ऑफेंसेस हो रहे हैं। ये ऑफेंसेस कर जाते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ये पकड़े जाते हैं या ये भाग जाते हैं या छुट जाते हैं। अगर ये पकड़े जाते हैं तो लीगली देखा जाए तो इनको जो क्राइम का एक पनिशमेंट होनी चाहिए या जो ट्रायल होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इनको इनका इनका एक अलग सेंटर है जुनाइल एक्ट का, ये उसके अंडर जो है अपना जो भी ऑफेंस होता है उसके बेसिस पे ये जुनाइल बोर्ड में चले जाते हैं, वहां ये रहते हैं, एक तरह से शेल्टर रूम्स हैं। और जो इनके गैंगस्टर्स हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको भी पता होता है कि विद इन 6 मंथ 7 मंथ्स आखिर में ये बच्चे वापस आ जाएंगे, इनको ऊपर कोई हार्श पेनल्टी नहीं होगी, कोई हार्श इनको पनिशमेंट्स नहीं होंगी, और ये अपना क्राइम करते रहेंगे। तो बेसिकली हम लोग उन लोगों को भी देखना चाहिए जो हम लोगों जो इन बच्चों को गुमराह करते हैं और या इन बच्चों का इस्तेमाल करते हैं क्राइम करने के लिए। अभी यहाँ तक मैंने आपको जो भी बताया, एनी क्वेरीज यू आर हैविंग पर्टेनिंग टू दिस थिंग, और एनी सजेशंस और एनी इनपुट यू वांट। सर माय क्वेश्चन इज, दिस इज एन क्वेश्चन फ्रॉम हर्षल मुंजार। Sir, my question is that if a
children committed, I'm sorry, children committed any crime, you don't think so that children are taking benefit of the. Yes, I feel that. That's why Harshel, I just wanted to say every coin has two faces. There are certain basically a bacha. If we talk about the crime committed by a children, I must say this thing: why a child will commit a crime? He is such an innocent person. He will not commit a crime, and no crime can be committed by an innocent person. Where this is the thing in mens rea, we are you must be aware about it, the mens rea, where the thing is where the intentions are, the motives are there. The crime all it was is already only been committed where there is a criminal intent, there is a criminal mind setup. Now the children doesn't have that criminal mind setup, but unfortunately or fortunately, if we look about the percentage and the ratio nowadays, the trends which they are going, crimes are being committed regularly by the childrens, and the childrens they are committed in two segments. One segment is that somebody is controlling them to do that crime for their favor, and second intention is that the children, the mental setup of the child is becoming more, they are becoming more and more mature. If we talk about the child of 16 years, now 16 years of a child has a much more maturity, just like a for 25 years of age. Now the maturity level has also changed. Once the maturity level has changed, the crime, the intention of committing a crime has also changed, and most of the crimes are being committed, the percentage has increased. So I think whatever your query is, I think it's been done. Okay, thank you, Harshit. Hmm? Any more queries? Any more queries? I'm waiting for your queries. Yes, Sanjay Shahji, your query is Supreme Court should revise and review the age of majority in today's time due to reasons of maturity being much earlier than past few decades. What is my opinion? Now, Sanjay ji, I just wanted to say you have asked a very valid point.
and basically it is my opinion also, and it is the need of the time right now. Most of the time the Supreme Court should define these things basically as far as the maturity level is concerned, because if we see the contents of section 83 of IPC, it clearly gives the intention about the maturity. It talks about the maturity level. So that maturity level, as far as when the law was being made at that time, when the things were being done, the maturity level of the child was not much. They were not polished, they were not groomed up, they didn't have the social exposures, they didn't have the society exposure, they were not aware about the outside world. Now due to the social media and other things, and that's what I'm saying, every coin has two phases. Now one phase is the technology favors it, it is a very good thing so that you are aware about all those things, but it has also, it goes against you also when you try to use these technologies in a different manner, in a negative manner. So the maturity level of the child, it needs to be it needs to be discussed very, you can say this is the need of the time. And second thing is, I must say it is my, because you have asked about my opinion, so I am saying that it's my opinion that the majority and the mental setup of the child should be considered, and the age barrier, the age definition, the minor definition should be discussed, so that things should be settled down, and there has to be a cross check towards the minors. I think Mr. Sanjay Shah, you must have got my answer. This is spread. Sir has pointed out by you that these some spells misuse the children for the commission of crime, they should be punished. Question: is there any provision in the law to punish such? Is there any provision under law to punish such screens? Okay, you are Mr. Anuji. You are talking about the children, those who have committed the crime, and they are being punished under the law. So basically, my only observation is there are juvenile courts. There, the proceedings are going on into those things. But my only worry about is that basically the crime, if the minor commits a crime, and then is the same crime has been committed by a major, so the line of action, the line of the, you can say, the legal propositions are different from for both the sides. If we talk about the Nirbhaya case also, the other four accused, out of the four accused, they were hanged, and the guy who was minor got the benefit of the juvenile and has gone through with the proceedings under the Juvenile Act. But the punishment which he should have got it, he didn't have that punishment because he was a minor. Hmm? Sanjay Shah, should age of the majority be at least 15 years and above, since they gain maturity much earlier? So how do you go about getting into Supreme Court attentions? Yes, I just want to say it's not basically a 15 years of age, rather. We should talk about the maturity level of the guy. And now we have got so many parameters so that we can identify or justify the maturity level of a person. Though there can be a possibility that, as far as your submissions are concerned, your suggestions are concerned, that 15 years. But it's not that if you define the fit to be 15 years, then 12 years, 12-year boy doesn't do that thing, or doesn't have the maturity level as compared with 15 years. So first thing is the maturity level should be considered. There are so many agencies, there are so many things.
there were so many procedures from whom you can identify the majority level now, but later on the age should be defined. At least the age which has been specified right now should be decreased. Let it be 15, let it be 16, let it be 14 also. So there has to be a discussion, and it should be done as early as possible, so that the crime, basically what I personally feel is, even still I do feel that the crime are being done, but the mens rea, the people behind those the, the person, those who are poisoning the mind of the children, are very important. And because of their instigations, and because they are backing up to commit those things, the children are committing the crimes. They are more prone to it, and basically the social media also, I do feel that it is also a very important responsibility, that it has equal responsibility for creating all these things. बिकॉज क्योंकि मैं एक मानता हूँ आपको, आप शायद मुझे नहीं पता कि आप इस चीज़ से सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन हाँ, जैसे कहते हैं, जैसा खाना वैसा आपका विचार, जैसा आपका आचरण वैसा आपका विचार, जैसे आपके कपड़े पहनेंगे आपका वैसा विचार होगा। और ये एक बहुत जो मैंने महसूस किया है, मैं आपको उससे शेयर कर सकता हूँ, करना चाहूँगा राधा, कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चला के आप फास्ट म्यूजिक चलाएंगे उस गाड़ी में, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो गाड़ी की स्पीड है, जो कार की स्पीड है, वो 100 पार जाएगी, या आप उसको और स्पीड अप करेंगे। लेकिन अगर आप उसी गाड़ी में एक भजन लगा देंगे, कुछ ना कुछ एक भक्ति का कोई गाना लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड जो है वो 60 से ऊपर नहीं जाएगी, आप शांति की तरफ जो है शांति से गाड़ी चलाएंगे। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल इसलिए दिया कि आपका जो वातावरण है, आपका जो सराउंडिंग्स है, उनसे आपको बहुत फर्क पड़ता है, और आपका जो माइंड जो गेम चलता है, उस माइंड सेटअप्स के कारण ही आपको जो है आप चीज़ें कमिट करते हैं। आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, आप सराउंड होंगे नेगेटिव चीज़ों पे, तो आप जो है, और ऐसे जो बच्चे हैं, वो जो माइनर जिनको हम कहते हैं, वो बच्चे जिस संगति में रहेंगे, जो परवरिश में रहेंगे, या जो उनको उकसाएगा, या जो अपने हिडन इंटरेस्ट से उनको ग्रूम करने की कोशिश करेगा, वो बच्चे हैं, वो वहीं के वहीं चल देंगे, उसी दिशा में चल देंगे। तो ज़रूरी है हम लोगों को डिस्कस करना, लॉ को डिस्कस करना, आज के वक्त की ज़रूरत है ये, कि बच्चों को जो क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से अभिशाप है, दो तरह से अभिशाप है। एक तो बच्चे क्राइम कर रहे हैं, बच्चे क्राइम की तरफ जा रहे हैं, देश के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है, आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए अच्छा नहीं है। हम लोग आगे जनरेशन में क्राइम थोड़ी ना देना चाहते हैं। दूसरा, सबसे दूसरा नुकसान ये है कि इनके कारण से जो क्राइम है, एक दहशत की जो जिंदगी लोगों में आ जाती है, एक दहशत मन में आती है, जिसके घर में चोरी हो जाती है, और वो चोरी बच्चा कोई करके चला जाता है, तो जिसकी चोरी हुई वो भी एक तरह से दुखी रहता है, टेंशन में रहता है, तो एक तरह से माहौल खराब ही रहता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो हम लोगों के माइनर का जो इसमें चेंजेस बहुत ज़रूरी है। So now I think all questionnaires have been done. I think no more questions at last. Anything you want to discuss, you can. Okay. Now, any queries and all those things will be asked at the later stages. Now we will come again to discuss all those things. What the study of children under juvenile justice system in India says. Basically, what we'll come to the definition part of the child. Child definition in the sense what we are talking about, the minors, we are talking about the children. Children are basically those who are the honorable court in the case
Example of Lakshmikant Pandey versus the Union of India and the Supreme Court. हेलो. हाँ. अभी हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं वो डिफाइन ये कर रहे थे आपके. हमने 82 पे डिस्कस किया, 83 पे डिस्कस किया, 317 पे डिस्कस किया, और उसके बाद हम लोगों ने उस पे बच्चों पे डिस्कस किया कि हाँ जुवनाइल कोर्ट्स हैं, जुवनाइल बोर्ड्स हैं, रिफॉर्मेशंस हैं बेसिकली. इसके साथ हम लोग आपस में आगे चले तो पर्सन फ्रॉम इंडिया आगे जाकर हम 363 की जो अगर हम डेफिनेशन देखें जो गार्जियनशिप की बात बताते हैं कि अंडर द लॉफुल गार्जियनशिप्स एंड किडनैपिंग्स वगैरह में जहाँ पे एज बहुत डिफर करती है, एज मैटर करती है, वो मैटर ये करती है. उसके बाद से आपकी पनिशमेंट्स है, और this ensures the safety of our children. Section 369, whoever kidnaps or abducts any child under the age of 10 years. Now, this is very important. Whoever abducts any child under the age of 10 years with the intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child shall be punishable with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine. Now, the thing is, the law has already been specified. It is giving the protections also, and the protection is also only given pertaining to specify that what are the allegations are there and how the crime are being committed. As far as the present scenario is concerned, मोस्ट ऑफ द, जैसे मैंने आपको, मैं फिर उसी चीज पे वापस आऊंगा कि जो बेगिंग की बात थी, जो हम लोग आजकल देखते हैं सड़कों पे देखते हैं, जो बेगर्स के तौर पे बच्चे आ जाते हैं, और हम लोग उनको सिर्फ एक फील कर इमोशनल भाव से फील करते हैं या कि दिस थिंग शुड नॉट बी डन या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग उनको पैसे भी देते हैं, कई लोग खाना भी देते हैं. बट इसके पीछे एक ये जानने की जरूर कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को, इट्स ए माफिया. और माफिया अगर नहीं है वो तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल इंटेंशन है उसमें, क्योंकि वो बच्चे जो उनके पेरेंट्स हैं, या तो उनके पेरेंट्स ने उनको परमिट किया हुआ है, या उन पेरेंट्स ने उन बच्चों को ऑलरेडी किसी के पास दे रखा है जो अपने अपने स्वार्थ के लिए उन बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है और उनसे बेगिंग करा रहा है. इट इज ए क्राइम. बट और ताज्जुब की बात तो ये देखिए कि लॉ हमारा है, उसके बाद जो हमारी पुलिस है, जो शासन है हमारा, उनको सबको पता है कि ये हमारे एरिया में जो भी जैसे कंसर्न एसएचओज हैं, कंसर्न पुलिस स्टेशन हैं, उनको सबको पता है कि हमारे एरिया में कहाँ बेगिंग हो रही है, कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे भीख मांग रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं. दे आर लीस्ट bothered about that. So it clearly gives an indications that they are taking it lightly, and the law which has been just to safeguard the interest of the child, for the welfare of the child, is been not properly executed, and those things are being executed by those persons, those who wanted to misuse the misuse the mind setup of the minor, or misuse the happiness of the minor. तो लॉ उनको उनके साथ जो है उनके साथ खिलवाड़ का हो रहा है, और एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है. एंड बेसिकली दिस इज ए वेरी गुड. आई जस्ट वांटेड टू से, आप लोग अगर आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उस डिस्कशन में आप अगर, इफ यू आर रियली कंसर्न अबाउट इट, आई जस्ट विश कि आप लोग इस चीज़ पे सोचें और इस चीज़ पे कुछ ना कुछ हम लोग करें, सो दैट वी कैन क्रिएट ए वी कैन एटलीस्ट नॉक द डोर बिफोर द कोर्ट, सो दैट कि कोर्ट कैन लुक इनटू दीज मैटर्स इन ए सीरियस नोट. एंड जो अभी एज मेच्योरिटी लेवल की भी जो बात हो रही है वो भी डिस्कस हो इसमें, एंड इट शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल. एनीथिंग. This is a query from Chirag Goel. How can the child trafficking be stopped? How to create awareness? Although there is a child witness or child court is created by courtroom, yet they are not more capable to us. No, I just चिराग जी ऐसा है, मैं आपकी बात ये इस बात से इत्तेफाक नहीं हूँ कि कोर्ट रूम्स जो है they are not capable to answer, but the thing is everything the infrastructure, my point is that we have already made all the infrastructures. हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, जुडिशल सिस्टम उस पर काम कर रहा है, लेकिन बेसिकली जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग रुक नहीं रही है. आप और चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकना बहुत ज़रूरी है.
आज की डेट में भी बच्चे जो हैं गायब हो जाते हैं, गुमशुदा की रिपोर्ट्स होती हैं, वो बच्चे मिलते नहीं हैं, या तो वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आ जाते हैं या वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग में उसमें आ जाते हैं, उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं, या उनको डिसेबल कर दिया जाता है ताकि जो है उनको किसी जो है कोई पहचाने ना, या फिर उनको यूज किया जाता है अपने हिडन इंटरेस्ट के लिए या मेलाफाइड इंटेंशंस के लिए, सो दैट कि वो उनका इंटरेस्ट पूरा हो जाए। तो दिस आई एम वेरी मच हैप्पी कि आपने यू आर कंसर्न अबाउट दैट दैट द चाइल्ड ट्रैफिकिंग शुड बी स्टॉप। एंड जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिया, भी जो स्ट्रीट स्ट्रीट जो बेगर्स हैं उनका वो दिया कि उसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे ही हैं सारे, और वो बच्चे कहाँ से आते हैं? देखिए ना, आप अगर बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, बीइंग द पेरेंट अगर बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं, देन आल्सो इट इज ए क्राइम, यू आर बीइंग पनिशेबल अंडर दैट थिंग। और वो पनिशमेंट जो है, ऑफेंसेस जो बनेगा, वो बनेगा कहाँ बनेगा? वो तो पुलिस प्रशासन ही बनाएगा ना, हम और आप तो नहीं बनाएंगे उसमें। लेकिन वो पुलिस प्रशासन जो है, वो चीजें उनको पता है कि उनकी नाक के नीचे ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन वो चल रहा है। अब कोमल जी का एक आया, सर, इफ ए माइनर कमिट्स एन ऑफेंस अंडर सम मेजर, इज द is not this minor is got punished? If yes, then what is the punishment in the case he introduced? देखिए कोमल जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैंने शायद उसका जवाब अभी आपको दिया था, या उसका जवाब आपको वैसे ही मिल गया होगा जब मैंने आपसे अभी जो बात चल रही है कि आपको एक इस पे माइनर का डेफिनेशन और माइनर का जो एक तरह से जो हम लोग ड्यूल देखते हैं ना कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक क्रिमिनल का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक नॉर्मल जिसने क्राइम किया है उसके बीच में और एक माइनर के बीच में। माइनर जो है, आप जो निर्भया का केस हुआ, आप इसी से देख लीजिए और आपका जो क्वेश्चन है उसी से क्लियर हो जाएगा कि क्राइम जो था वो सबने किया था, और इट इट वाज ए हीनियस क्राइम। ठीक है, उसके बाद लॉ चेंज हुआ, निर्भया के बेसिस में अमेंडमेंट आया, सीआरपीसी में अमेंड हुए, लेकिन वो जो था, वो सारी सारी चीजें जिसमें सबको पनिशमेंट मिली, और ट्रायल लंबा चला, 7 साल ट्रायल चला, 7 साल ट्रायल के बाद भी उनको जब पनिशमेंट मिली, तो ह्यूमन राइट्स के थ्रू जिनके पास भी जो पैरामीटर्स थे या जो नेसेसरी स्टेप्स थे, जो उन्होंने सब चीजें अडॉप्ट की, और आखिर में एट द लास्ट 7.5 ईयर्स में उनको पनिशमेंट मिली। लेकिन जो माइनर था, वो देखिए आप, वो आराम से निकल गया। अब वो आज भी बाहर देखा जाए तो उसको कुछ नहीं हुआ। और अगर आप एलिगेशंस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो अटैकिंग मोड पे था, एग्रेसिव मोड पे था। प्रियांशी जी, does the child who commits crime like an ordinary man do will be considered as a child only, or will be punishable like others even when he is sadist? प्रियांशी जी, जो मैंने शायद अभी जवाब आपको एग्जांपल दिया इसका निर्भया का, उससे शायद आपकी क्वेरी पूरी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने शायद सुना भी होगा, देखा भी होगा, क्योंकि ये मीडिया ट्रायल भी था, मीडिया में अक्सर आता रहता था। इसमें बेसिकली दिक्कतें यहाँ वो है कि जो एक क्राइम हो रहा है, अगर वो माइनर है तो ही गेट्स द बेनिफिट ऑफ द जुवेनाइल कोड, और जुवेनाइल कोर्ट में उसकी ट्रायल चलती है। जुवेनाइल कोर्ट में जो ट्रायल चलती है, वो उस ढंग से जो उसके रिजल्ट्स हैं, जो पनिशमेंट्स है, बेसिकली वो पनिशमेंट्स वो नहीं हो पाती, वो नहीं है हमारे यहाँ। जो पनिशमेंट जो है, जो मेजर के लिए है, अगर वही क्राइम एक 19 साल का बच्चा करता है, 20 साल का लड़का करता है, या 21 साल का बच्चा करता है, उसको तो पनिशमेंट्स मिल रही है। और जैसे फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ निर्भया का, कि निर्भया में आप बाकी सबके देखिए डेथ पेनल्टी मिल गई, उस लड़की बिकॉज ही वॉज माइनर, उसको जुवेनाइल कोर्ट में केस चला, और वो जो है उसको कोई फांसी नहीं मिली, और इसमें बड़ा ह्यूमन क्राइम हुआ। तो यही रीजंस है कि अब हम लोगों को ये चिंता का विषय है कि ऐसे जब क्राइम बच्चे करते हैं और इतने हीनियस क्राइम करते हैं, तो आप जो माइंड सेटअप की बात करते हैं बच्चों की, जो माइनर्स की माइंड सेटअप की बात करते हैं, उनका मेंटल स्टेटस की बात करते हैं, तो वो जो व्यक्ति इतना बड़ा क्राइम करने की सोच सकता है और करता है, उसका मेंटल मेंटल स्टेटस तो ऑब्वियसली बहुत गलत है और बहुत खराब है। उसमें जो माइनर की डेफिनेशन के बेसिस पे जो उसको प्रायोरिटी मिलती है, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड फॉर दिस रीजंस ओनली लॉ नीड्स टू बी चेंज।
Sir, can a major who misuse a minor for getting committed a crime be punished in place of minor? अभी अनुज जी एक और केस था आपका, दिल्ली का ही केस है, आपको शायद, आपने तो खैर इसको पता भी होगा, जो इसमें जो माइनर ने जो किया था, एक सिविल लाइंस का केस था जहाँ पे एक माइनर जो है कार चला रहा था BMW, और उसने एक मेजर था उसको उड़ा दिया था, वो भी जवान लड़का था, उसको उड़ा दिया था, और उसके वो जब हिट किया उसको तो वो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है डेथ होने के बाद उस पर केस बना, बाद में पता चला कि वो माइनर था, तो माइनर का उसको उसकी जो प्रोसीडिंग्स थी या जो उसकी ट्रायल थी वो जुवेनाइल कोर्ट में गई। जुवेनाइल कोर्ट के बाद उसके बाद जुवेनाइल कोर्ट ने क्योंकि प्रेशर रहा, मीडिया का प्रेशर रहा, और जिन जिन टॉपिक्स पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं उस पे ये हुआ कि जी नहीं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी पनिश करना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ जो आपका क्वेश्चन है कि हु मिसयूज ए माइनर फॉर गेटिंग ए कमिटेड। तो बेसिकली कोर्ट ने ये माना कि जी ये माइनर को मिसयूज किया था, मिसयूज इन द सेंस पेरेंट्स ने किया क्योंकि उनके नाम से गाड़ी थी, और उसी मिसयूज के कारण उन्होंने गाड़ी की चाबी दी, उनको गाड़ी की परमिशन दी, और उस परमिशन से जो है उसने एक आदमी को हिट किया रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के माध्यम से। उन पे एफआईआर हुई, उन पे बड़ा ये चर्चित केस हुआ, मीडिया में भी आया, लेकिन उसके बाद वो सेशन कोर्ट गए, सेशन कोर्ट ने उनको कहा कि ठीक है, नहीं, whatever the FIR has been registered against you is okay। उसके बाद वो फिर अपील पे गए, और लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर आया कि नहीं, दे हैव नथिंग टू डू विद दिस थिंग, whatever the incident has to taken place, it is only due to him, and these people are not at all linked with those things। तो सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिला। तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि हाँ, मिसयूज की जो बात करते हैं आप, उसमें 317 पे जरूर आता है, 17 पे आता है हमारा, कि मिसयूज में माइनर अगर को जैसे हम लोग वो, हालांकि उसमें मिसयूज वाली बात नहीं आती, लेकिन हाँ कोई भी पेरेंट्स, तो अगर अपने बच्चे को जो है अबेंडन कर देता है, 12 साल के बच्चे को अबेंडन करता है, माइनर को अबेंडन कर देता है, तो देन ही इज पनिशेबल अंडर दैट, अंडर द लॉ, अंडर द आई 317 IPC। बट अब जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि जो जो बेगर्स हैं, बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, जो बेगर्स हैं, उनमें अगर आप सिचुएशंस देखें, पॉसिबिलिटीज देखें, प्रोबेबिलिटीज देखें, तो वही चीज़ें आती हैं कि या तो उनके पेरेंट्स ने उनको जानबूझ के खुद उस चीज़ में धकेला है, अगर उस चीज़ में धकेला है तो भी आप ये देखिए कि उन्होंने क्राइम किया है, लेकिन चीज़ें क्या है कि एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है हिंदुस्तान में। और लॉ में चीज़ें देखिए, कानून कोर्ट बनाता है, कानून कोर्ट इम्प्लीमेंट भी करता है, चीजें जब उनके पास आती हैं, लेकिन उन वहां तक चीजें आएंगी कौन से? देखिए, हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि पुलिस का एक अपना डिपार्टमेंट है, पुलिस का जो है क्राइम, जो क्राइम होता है उनको पकड़ना, उस क्राइम को रोकना, और अगर क्राइम हुआ है तो उसको प्रॉपर जो है डिफाइन करके चीज़ों को अच्छी तरह प्रेजेंट करना, ताकि कोर्ट में उसको उस क्राइम के बेसिस पे जो उन्होंने कमिट किया उसके बेसिस पे उनको सजा मिले, या जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले। लेकिन ऐसी प्रेजेंटेशंस हो नहीं पाती हैं, इसी रीजन से जो है ये सारा मिसयूज हो रहा है। और आप जो मेजर की बात कर रहे हैं कि मेजर में जो मिसयूज तो मेजर ही कर रहे हैं, आप जो बच्चे हैं, हम तो वैसे भी डिफाइन करते हैं हिंदुस्तान में, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, लेकिन बच्चों से अगर क्राइम हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई हिडन इंटरेस्ट है, कोई ना कोई मेलाफाइड इंटेंशंस है किसी न किसी की, जो उनको प्रोवोक करती हैं, जो उनको एक्साइट करती हैं, जो उनको गुमराह करती हैं इस दिशा में जाने के लिए। This is the thing. Sir, any more questions about boys' locker room, as Delhi High Court set to punish these group of boys, but finally it was revealed that it was fake. So please, if you can tell me about this also. बेसिकली जो लॉकर रूम का जो दिल्ली का इंसिडेंट था, इट वाज बेसिकली the investigation was not properly being done, rather, and the court is very serious about it. The court cannot, basically court can take a suo moto, कोर्ट suo moto भी लेती है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन जब एक कंप्लेंट हुई और एक कंप्लेंट गई और एक इन्वेस्टिगेशन हुई, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें सामने आई, वो एक जो चीज़ें पहले आई थी वो चीज़ें एंड में नहीं हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस रिप्रेजेंट हुई थी। दैट वाज द ओनली रीजन कि उसमें आगे मामला नहीं बढ़ पाया।
और जो है वो मामला एक तरह से खटाई में पड़ गया और ठंडे बस्ते में जिसे कहते हैं देसी भाषा में, वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। अदरवाइज तो courts are also concerned about it, and it's not matter of the court, everyone is concerned about it। आज जितने भी हम लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो भी ऑनलाइन है, जो देख रहे हैं, जो क्वेरीज दे रहे हैं, all we all are concerned about this thing, and this issue is very sensitive issue and it needs to be rectified। it's need basically आज हम आप कहीं ना कहीं इस सब चीजों से पीड़ित हैं और पीड़ित, और कहीं ना कहीं हम लोग समाज में रह रहे हैं, हमें चिंता है इस बात की। बाकी कोर्ट सीरियस है, सिस्टम इज सीरियस, ओनली द थिंग इज if one department of the investigation, that's what I'm saying ना, जैसे कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है जी हम उनको पनिश करेंगे, तो पनिश करेंगे मीन्स उनमें पनिशमेंट का ये करेंगे कि उनमें जो आपके जो और दूसरे एक्ट्स थे आपके, जो आजकल ये चल रहे हैं, वीडियोस पे चल रहे हैं, इन पे साइबर क्राइम चल रहा है, ये इस पे ऑफेंसेस होंगे, चलेंगे, लेकिन वो जुवेनाइल पे ही चलेंगे अगर बच्चे हैं। लेकिन उसमें पता चलता है कि अगर बच्चे किसी के साथ ट्यूटर्ड है, देखिए मैंने अभी आपको फिर पहले बोला कि ये जरूर देखना है कि वो बच्चे अपनी इंटेंशन से कर रहे हैं या वो किसी के उकसाने में कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन से ही निकलेगा कि उनकी इंटेंशंस क्या थी। Smriti ji, sir, what are you talking about about because if the mastermind of minors will be identified, who is a major, he will be going to punishable also. Yes, yes, that's what I'm saying, Smriti ji। मैंने मैं हमेशा इस बात को आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट इट एंड लॉ इज सीरियस अबाउट इट, बट इट्स ए माफिया, आई यूज द वर्ड माफिया। बेसिकली जो बेगस की सिचुएशन है पूरे हिंदुस्तान में है, आप ये देखिए कि जो बेगस की जो तादाद है पूरे हिंदुस्तान में है, हम लोग सब लोग देखते हैं इन सब चीजों को। और उनमें आप तो माफियाज की बात कर रहे हैं, मैं तो पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर वो बच्चे पेरेंट्स परमिट कर रहे हैं या पेरेंट्स भी जो है उनको उनसे बेगिंग करा रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज ए क्राइम, दे शुड बी पनिश्ड। लेकिन आज वो पनिशमेंट या वो एग्जीक्यूशन कौन करेगा? वो एग्जीक्यूशन तो पुलिस करेगी ना, पुलिस विल फ्रेम द चार्जशीट अगेंस्ट दोज पीपल, इन्वेस्टिगेट द मैटर। इन्वेस्टिगेट इन द मैटर इन द सेंस कि पुलिस ये तो देखे बच्चों को पकड़ के, कि बच्चों से ये पता चले कि उनके पेरेंट्स कहाँ हैं, पेरेंट्स करवा रहे हैं उनसे या कोई और आदमी करा रहा है, इट इज ए ट्रैफिकिंग। अब वो ट्रैफिकिंग में ऑब्वियसली whoever is the culprit, he will face the consequences। As per the law he will face the consequences, but the only problem is that these police is aware about it, we people are aware about it। और अब कुछ एनजीओज है, जैसे चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर्स में लोग बच्चे काम करा रहे हैं, कुछ एनजीओ आप नोट करना ये भी कि पुलिस भी अब तो थैंक्स टू एनजीओज, रादर सो मेनी एनजीओज आर देयर, दे आर वर्किंग हार्ड ऑन दीज इश्यूज। वो कंप्लेन करती हैं, वो पुलिस के साथ जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिगेट करती हैं कि किस घर में कितने बच्चे जो है क्या कहते हैं नौकरी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं जो उनकी एज नहीं है, चाइल्ड लेबर जिसको कहा जाता है। लेकिन वो फिर उसके बाद रेड मारते हैं, पुलिस तब उनके साथ जाती है, लेकिन वो परसिस्टेंट एफर्ट जो कर रहा है वो एनजीओ कर रही है। एनजीओ के काम नहीं है, बेसिकली देखा जाए तो एनजीओ तो एक सोशल सर्विस कर रही है, ये काम सोशल सर्विस का तो ऑटोमेटिकली पुलिस को कर लेना चाहिए। पुलिस के पास पूरा मैकेनिज्म है, उनके पास हर एरिया में बीट कांस्टेबल्स होते हैं, बीट कांस्टेबल्स को एक एक एरिया का पता होता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स का पता होता है, छोटे छोटे पॉकेट्स का पता होता है कि कहाँ काम हो रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर पार्ट। एंड दैट इज द ओनली रीजन जो मैंने आपको फिर आपको रिपीट करना चाह रहा हूँ कि ये बच्चों के मन में कोई छल नहीं होता, इनके मन में कोई कपट नहीं होता, इनको ग्रूम किया जाता है, इनको मशरूम कर किया जा रहा है, मैलाफाइड इंटेंशंस है इनको ग्रूम करने के लिए, उनके अपने हिडन इंटरेस्ट है उसको उसको ग्रूम करने के लिए। तो वो चीजें जरूर देखनी पड़ेंगी, और जब अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें मास्टरमाइंड कौन था, इसमें किंग पिन कौन था। अब जो मास्टरमाइंड जब आप आइडेंटिफाई करेंगे या किंग पिन आइडेंटिफाई करेंगे तो उनके खिलाफ आप एलिगेशन, उनके दे विल बी प्रोसिक्यूटेड। एनीथिंग मोर?
देयर इज नो क्वारी। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, तो बैगिंग वाली जो बात आती है, बैगिंग के ऊपर भी, बैगिंग के लिए किडनैपिंग का, और इसमें 363 ए जो है आपका एबडक्शन किडनैपिंग जो है, उसमें क्लियर मेंशन है किडनैपिंग और मेमिंग ए माइनर फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग। Now, whoever kidnaps any minor, now if it has been done with the permission or with the authority by the parents, then also it is wrong. Legal. What if a minor has committed multiple? So whether he would be considered a minor or punishable? Like, no, minor is a minor. My only thing is minor will be a minor. Anything, any crime or whatever has been done under the minor age of the minor, it will be treated as a minor. He is getting the benefit of the age, the minor. And because even when the mental setup is now, if you commit a one crime also, when you are being having the benefit of minor, without taking care of your this mental setup. Still, if you commit two crimes, that is the only reason the crimes are being committed more and more by the minors. And if we talk about whoever kidnaps any minor or not being the lawful guardian of a minor, obtains the custody of the minor in order that such minor may be employed or used for the purpose of begging, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. Now, law has given the punishments also, they have given the sections also, everything has been written, but the thing is, it's been not been executed. The no police department has taken care of picking up the minors, those who are begging in streets. They have not picked them up. They have not inquired about them from them. कि who is the person behind that, because ऐसा नहीं है कि वो बच्चे जो हैं एकदम अनाथ होके आ गए, और अगर सपोज कर लीजिए उनके पास खाने को, रहने को शेल्टर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो उनको रिफॉर्मेशन, हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड, उनको एजुकेशन मिले, उनको अच्छा, उनको रहने के लिए घर मिले, एक अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बट द थिंग इज दिस थिंग्स आर नॉट बीन प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड, एंड दैट इज द ओनली रीजन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दे आर माफियाज बेसिकली, they have joined hands with the government department, so that कि आप सोते रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। दिस इज ए वेरी ग्रेट कंसर्न, एंड ये धीरे 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 ये नासूर बनता जा रहा है। और now this is what will be the gravity of a punishment of the mafia equal to the punishment. Yeah, it's not the basically the, if the we're talking about the mafia and the punishment that has been specified. I have already read the 363A. अभी मैंने आपको पढ़ के बताया कि उसमें अगर आप जो बेगिंग के लिए जो आप जो कर रहा है, जो उनको उनकी कस्टडी को माइनर की कस्टडी को अपने पास रख रहा है जस्ट फॉर, एंड ही इज यूजिंग दैट फॉर द बेगिंग और एम्प्लॉइज, he is punishable for the offense for 10 years and shall be liable for fine. And whoever maims any minor in order that such minor may be employed or used for the purpose of begging shall be punishable with imprisonment for life and shall be liable for fine. So it has been specified in 363A. It's not a matter of, but the thing is, the only concern is that these people should be identified. That the person, those who are the mafias, they should be identified. The person who is behind this thing, who are the culprits, they should be identified. What will be the gravity of the punishment of the war equal to the punishment? I think I have already stated to you. It is the gravity of the punishment as far as the allegations are there. As far as the situation investigation part is concerned, they will be booked under 363A, and they will be facing the trial on the basis of that section, and whatever the punishments are there, it is 10 years also, it is the punishment is for life also with the fine. So as far as the investigation, as far as the prosecution story is concerned, if after going through it will be noted. Now this is whether on the basis of feeling or assumption the court will give any reason for a juvenile or any law, whether on the basis of feeling or assumptions, the court will give any decision for a juvenile or any law. Shruta ji, I am not aware. I am not clear about it. I'm not clear about it. What you have said, but what I can feel is basically it's not a feeling or assumptions of the court. Basically, when there is a minor, the investigation, the trial would be in the juvenile court, and as per the minor, as per the juvenile act. So it has nothing to with to deal with the with the major one.
And I think if it's not been clear to you, I will be needing a specific query, because whatever you have stated in your query, I have given this thing. अगर आपको शायद कोई और है तो मुझे थोड़ा सा स्पेसिफाई करके बताएं, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसमें बैगिंग की बात हम करते हैं, और ये बैगिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। बैगिंग मीन्स व्हाट? अब माइनर एंड बैगिंग, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सॉलिसिटेटिंग और रिसीविंग arms aims in the public places, whether under the patience of signing, dancing, fortune telling, performing tricks, or selling articles or otherwise. Now it covers everything, and you will find all the street beggars. They are being covered either in one segment or the other segment. Entering or any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms, exposing or exhibiting with the object of obtaining or extorting alms, any sore, wound, injury. Now, using a minor as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving alms, these are everything has been specified. Now the person, those who are misusing these minors, they are punishable, and law has provided the sections, provided separate proceedings against them. But the thing is, it's only a matter that these things are not been initiated by the police. Any more query? It's, I think, 5 minutes more. Sir, no more queries. There is any more queries? I think we have talked so much that there is no query rather. But what I feel concerned is, it's that any country, if you talk about any country, the youth of the country needs is a backbone, is a, you can say, is the future of that country. And if we talk about India, India is a power, is becoming a power. India is becoming a power only because of this thing, that India has the population. India has the population in the sense not pertaining to one segment. If the new generation is coming, the new segments are coming, new offsprings are coming. So there is no gap between the age things. If suppose we talk about at the age of 80, there are 100 people. So if we talk about, if we come to 70 years of age, sir, if any person kidnaps more than one minor or a person of unsound mind, is given same punishment like single child's kidnapping. Yeah, it's an offense. No, the thing is that your question relates two things. One is, if one crime is committed, and in one crime, two minors are being abducted, then obviously the offense would be one, isn't it? FIR would be one, and once there would be one FIR, and investigation will be done, and the prosecution will be one. Then the trial will be one. Then the punishment will be also one, isn't it? But in that case, the punishment would be on the higher side. But if there are two crimes in the sense that one, if he commits a crime today, and another crime he commits after 2 months or 3 months, then there would be a separate uh, affairs, and there will be separate proceedings. There will be separate trial also, and the punishment would be also separate. Minor sexual exploitation, physical and mental abuse. Yeah, there are exploitation of minors. Minors are being exploited in begging also. Minors are being exploited in committing crimes also. Minors are being exploited in sexual these things also. So it's not that they are being confined. They are basically the crimes are, they are either they are committing crimes, or they are being misused in crimes in all the segments. And as per whatever the segments they are committing, they are being prosecuted under different sections as prescribed in IPC.
if a minor child commits a murder under some undue influence, will the better will get the yes, a better will be getting the punishment. A better will be prosecuted. It's not that if that's what I'm saying. The minor, it is the investigating agency who has to look into this matter, who has to identify that if a crime is been committed by a minor, then and that who was the manipulator, who groomed that mental setup of that minor. There are something, there is something, there will be something behind the mentality of the minor कि उसको किसने ग्रूम किया या उसकी मैलाफाइड इंटेंशंस को किसने हिट किया और तभी क्राइम हुआ और जो आपका बेटर है बेसिकली ही विल बी प्रोसिक्यूटेड. It's not that he will not be punishable. A better will be punished. Sir, now no more queries. We can end up this session. Okay, Sudhanshu ji, thank you. Thank you, sir. Thank you so Thank, much. thank you very much. Thank you very much. Okay, bye.